हाय एवरीवन, स्वागत है आप सबका मेरे एक नए वीडियो में। आज हम एक ओनरशिप रिव्यू करने वाले हैं एचडी की स्क्रैम्बलर का। मेरे दोस्त है मेरे पास निरंजन। हेलो, प्लीज से हाय। हाय। ठीक है, एंड थैंक यू सो मच, आपने टाइम निकाला सुबह सुबह। इनको बहुत दूर से मैंने बुलाया है। इनका जो एक्सपीरियंस है ये बाइक के साथ, एचडी स्क्रैम्बलर के साथ, वो सब हम आपके साथ शेयर करेंगे। जो लोग इस बाइक को खरीदना चाहते हैं उनके लिए थोड़ी बहुत हेल्प हो सकती है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, लेकिन आप एंड तक देखिए। सो पहले तो थैंक्स वंस अगेन, आपने इतना टाइम निकाला, इतनी दूर से आप आए। तो ये है इनकी बाइक एंड कुछ क्वेश्चन है थोड़े से जो हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो पहली चीज़ तो ये कि भाई आपने कब इसको खरीदा था? February 4th, ऑलमोस्ट 1 मंथ से ज़्यादा। 1 month, yeah, 1 month से। प्राइस कितना था ऑन रोड आप जब लिए थे? 253 ऑन रोड। कुछ मॉडिफिकेशन वगैरह एक्स्ट्रा कुछ लिया आपने? I added up the visor, the back grab handle, हाँ, अच्छा, and the crash guard. Okay, nice. So these are the additional accessories. ये कितना पड़ा आपको एक्सेसरीज पूरा लगाया तो? Visor I think 900 rupees. Crash guard for 750. Just 750? Yeah, just 750. Surprising. and grab handle I think around 450-500 rupees. हाँ, कम ही है, मतलब कम ही है। It's expensive नहीं है? Expensive, not so expensive. This one was the surprising of the lot. And how is the quality you feel? The quality is good, yes. But the quality of our Indian roads are not so good. Okay, and कितना किलोमीटर आपने अभी तक चला लिया इसको? 1300. मतलब 1 मंथ में सर्विस वगैरह भी करा लिया? हो गया, फर्स्ट सर्विस भी हो गया, या। हाँ, तो इसके अलावा जब आपने लिया तो बाइक दूसरे ऑप्शंस क्या थे आपके पास? Well, basically, I didn't want to look into options because it's CHD and it's a scrambler. I just went for it. अच्छा, मैं आपसे अभी बात कर रहा था तो you wanted to go for ESD. Yes. Well, frankly speaking, no, Prakash bhai, no, I didn't. I didn't even have a plan to buy a bike. अच्छा. I wanted to buy an electric. अच्छा. I owned a 220 before. I still have it at home. Pulsar 220, yes. So, but I wanted to shift to electric. But once I saw this beauty, I think I have to keep this. So that was the reason कि आपने ESD खरीदा तो. Yes. Okay. So any problem so far? कुछ भी आपको दिक्कत आया? Problems not really, but I have observed जब when we get on the bad roads, जब गड्ढे वड्ढे होते ना, it is a problem because once there were 2-3 instances where I just bumped onto it and उसके बाद there was small vibration starting from this part. Okay, I don't know if it is from here or from here, yeah. Okay. That's all. Apart from that, technically, mechanically, I didn't see anything, no fault. Just the vibrations. Yeah, just the small vibrations can be ignored. हाँ, that can be ignored. Again, इसको ऑफ रोड आप ले जाओगे तो आपको गड्ढे ज़्यादा फील होंगे और वाइब्रेशन कम फील होंगे. Yeah. So सर्विस कॉस्ट कितना है फर्स्ट सर्विस? सर्विस कॉस्ट 2000. Okay. Costed me 2000. And experience कैसा था सर्विस का? Service experience was good. Fortunately, the owner of the place where I took the vehicle is a friend's friend. अच्छा. So he gave me VIP treatment. Nice. I sat right in front of the bike and got it serviced. I hope सब customers को VIP treatment दे वो लोग. But yes, you know, I have been hearing good news from many customers, those who bought the vehicle जिनका फर्स्ट सर्विस हुआ. अब बात करेंगे थोड़ा सा माइलेज के बारे में. देखो, जब हम बाइक लेते हैं ना तो 2-3 चीजें हम देखते हैं. जैसे पहले तो माइलेज, फिर प्राइस एंड सर्विस की अवेलेबिलिटी. तो आपको माइलेज कितना मिल रहा है सिटी के? मेरे को कंपनी वाले told after 3000 kilometers you can expect 30-35. Okay. I did a full tank to tank testing before service. It gave me 28. City में? No, highway. Okay. And city, I think it will give you around 25, a little less, 1 or 2 kilometers less. And worst mileage, कितना भी भगाओ, कितना भी करो इसको, 24-23 के नीचे तो नहीं जाएगा ये. हाँ. See, again depends कि how you ride. How you ride, exactly. It's on the way you ride. You ride it with respect. The machine will respect you back. Correct. This is not a machine like, you know, it's not an everyday bike where you just rev it. You know, the more you show respect to it, the more it likes. You know, it is the same engine that is used on Perak. Yes. थोड़ा tuning वगैरह किया गया है इसका. Yes. That's what we have been hearing. Right. So, you know, in terms of engine vibrations, आपको क्या लगा? मतलब स्पेशली vibrations कब आते हैं? जब हम फर्स्ट सेकंड गियर में हायर आरपीएम पे खींचते हैं या फिर हम हाई स्पीड पे चलाते हैं. तो did you feel any, you know, unbearable vibrations? Not at all. Not at all. ऐसा नहीं होना चाहिए. Engine is very smooth. That's what I've noticed. Engine is smooth. The gear shifts are also smooth. A little on the harder side, the gears. But if you're wearing a boots or, you know, riding proper riding gear, I'm sure that should be easy. It's not so tough. And surprisingly, the engine is smooth actually. Smooth. Yeah, I didn't feel any vibrations yet. Plus, I didn't even rev so much.
हाँ, फर्स्ट सर्विस के बाद में yes. अभी आप करोगे, अभी डिस्कसिंग राइट है। Yes. गियर है थोड़ा हार्ड है, एंड आई थिंक थोड़ा दैट इज hard, द yes. कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्क्रैम्बलर बाइक्स। Yes, yes, यू नो actually. गियर रेशियो, द Right. वे दीस बाइक्स आर बिल्ट। आई आल्सो फेल्ट दैट कि थोड़ा बहुत तो गियर थोड़ा हार्ड है, एंड दैट कैन बी इग्नोर्ड, एंड आई थिंक वी विल गेट यूज्ड टू इट। Also over get the used period to of it, time. yeah. And this is not a bike where you can, just wear a flip flop or chappal and drive. Please don't do that. Wear always proper gear, It's a big shoes. engine, It's a big आपको engine, पूरा, yes. You should wear normal, decent boots. And its riding dynamics also it's very different. It is compared to how you drive a Bullet or Normal any other commuting normal. segment का bike, हाँ. Yes. So its is a little different. The more you love the vehicle, the vehicle will love you back. डिड यू राइड एनी अदर बाइक जैसे 350 सीसी का है ये सेगमेंट में? Yeah, I drove 350 Highness, H-Ness Honda. हाँ, Yes. तो Yeah. उससे कंपेयर करें तो स्मूथ में उसके compare, if you ask me, yeah, Honda is much smoother engine. it is Yeah. smooth. It They are is always smooth. Yeah. In terms of power, which one you Oh, think? power! Oh, please, come on. Yeah. ये different level है। Yes. Honda they always have their अपना They have, yes. relax engine And रहता है। Honda, that kind of vehicle, I believe, is someone who wants to, think about all the aspects in a Correct. bike. But this is for someone who lives in the moment, हाँ, and that's what I feel about this. correct. So you said हाईवे पे आपने चला है तो what is the easy cruising speed? आप एक 80-90 मेंटेन कर सकते हैं? Easily, yeah. Easy cruising speed is somewhere between 70 to 90, yes. Okay, Very cool, yeah. जी नॉर्मली क्या है आजकल आई हैव सीन पीपल जिस बाइक पे ट्यूरिंग करना है उस पे करते नहीं है, एंड इनफैक्ट इट्स ऑल गुड यार, यू कैन नॉट हैव डिफरेंट बाइक्स, एक ट्यूरिंग के लिए अलग, कम्यूटिंग के लिए अलग। Right. सो जैसे ये बाइक है दिस कैन बी यूज्ड फॉर ट्यूरिंग आल्सो, अगर किसी को Exactly. करना है This is- 80-90 की yes. स्पीड वी कैन मेंटेन, उससे ज्यादा तो स्पीड कहीं भगाएंगे, कहाँ Exactly. भगाएंगे, Yeah, रोड ही नहीं भगाएंगे, रोड ही नहीं, absolutely. सिंस दिस इज नॉट ए कंप्लीट ऑफ रोड बट नॉर्मल आप ऑफ रोड कर सकते हैं, सो डिड यू डू दैट? हम कुछ थोड़ा बहुत ऑफ रोड लेके गए? Well, not really. I've got a friend who recommended me not to go off-roading yet. He asked me to wait for at least 4,000-5,000 kilometers, ओके, and then maybe also I'm planning to get the tires changed. This आई is थिंक not 5-6,000 किलोमीटर के बाद में ये वाला yes record after engine. 5,000-6,000. This is not completely off-road tires. And I think they say that this is dual purpose tire. It's dual purpose. Yeah, it's dual purpose, but I haven't yet experienced it off-roading. But at So- least bad roads you might have gone on. Bad roads, yes, and trust me, the best handling it has got on Correct. bad roads. The handling is too good. I'm sure you will not find this thing with other bikes. That's for sure. And अब एक मेरा और क्वेश्चन है कि भाई देखो ये बाइक लेने के बाद में यू कैन नॉट गो टू हाईवेज डेली, आपको डेली चलाना है सिर्फ सिटी के अंदर। Yes, सिटी में yes. राइडिंग एक्सपीरियंस कैसा है इन टर्म्स ऑफ क्या Yeah. होता है, बड़ा इंजन है Yes. ऑलमोस्ट Yes. द पावर Yes. आउटपुट इज 29 bhp 28 Nm का टॉर्क वगैरह है। Yeah. सो ये गर्म वगैरह होता है सिटी में अगर आप ट्रैफिक में फंसे? Solid गर्म होता है भाई. Solid गर्म होता है। आपको ऐसा लगता है कि Yes. भाई अरे मेरे से अब नहीं चलाई जा रही है? नहीं, not ऐसा like नहीं है? that. No, not like that. The thing is, no, I feel this is not a city bike, This is not a basically, city bike, हाँ. because इसका जो like I said, riding dynamics है. This engine doesn't like to be, often gear shifting and all and Okay. braking. This engine doesn't like often gear shifting. It likes one constant gear and at constant speed you keep driving. Right. That is what I feel this is purposely built for. But city के लिए I would suggest, if you're okay with the heating, I think it should be okay. एंड मुझे लगता है कि ये 300 प्लस सीसी का इंजन होते हैं ना, वो थोड़े बहुत हीट होते हैं, थोड़े वो बहुत तो heat, नॉर्मल है yes, क्योंकि इतना yes, बड़ा इंजन आप yes, चला रहे हो, थोड़ा yes. बहुत हीट होता है। सो हमें डिस्टर्ब किया गया है, ये भैया यहाँ पे काम कर रहे हैं, विल कंटिन्यू दिस। ओके नाउ लेट्स टॉक अबाउट द सस्पेंशन। देखो ये जब मैं चला रहा था ये बाइक को तो मुझे लगा कि सस्पेंशन हार्ड है, Yes, ऐसा मुझे yes, लगा, yes. विच इज़ गुड फॉर द हाई स्पीड। आप हाई स्पीड पे अच्छा स्टेबल इसको रख सकते हो, बट स्पेशली जैसे आई ऑलवेज लुक फॉर ए बाइक विच इज़ मतलब वन स्टॉप शॉप रहता है ना कि भाई मेरे लिए हर चीज़ यही है, मैं इसको सिटी में चलाऊंगा, इसको ऑफ रोड लेके जाऊंगा, टूरिंग पे लेके जाऊंगा। मुझे लगता है कि डेली कम्यूटिंग के लिए थोड़ा जो हार्ड सस्पेंशन है वो दिक्कत करता है, दिक्कत इन द सेंस थोड़ा छोटा जो गड्ढे वगैरह है वो भी हमें फील होते हैं। सो व्हाट डू यू से अबाउट इट? आपको ऐसा लगा कि थोड़ा बहुत हार्ड वगैरह है, या फिर व्हाट डू यू से अबाउट द सस्पेंशन? The suspension is a little hard, yes, it is hard. If you notice those small, ये जो bridges के नीचे there's this lines of roads. अच्छा, वो रंबल स्ट्रिप्स वगैरह है। The strips. If those strips are hard, you will have to get up. You can't just sit and go. I always do that. उसमें तो हड्डियाँ हिल जाती है भाई, स्केलेटन पूरा हिल जाता है अंदर तक। See, it's on the little tough, harder side, yes. चलेगा, we can adjust to it, yeah. सो अभी हम जो सस्पेंशन की बात कर रहे थे तो मुझे एक चीज़ और याद आई कि पिलियन का कंफर्ट कैसा है? Frankly speaking, इसके ऊपर I just made one pillion set
and I asked him how does it feel. He said it's very comfortable and it's not so small. The seat isn't small, it's comfortable, and I don't want to make a pillion rider sit on this. Basically I just want to drive it alone. अकेले चलाने का मजा अलग है. You can feel the complete power of the bike. Yeah, and also iska when you make the pillion rider sit, you have to like fill in more air. तो थोड़ा दब रहा है, you can see it, थोड़ा दब रहा है पीछे से गाड़ी. Brakes वगैरह कैसे हैं? Braking is the best. Braking is ultimate. Ultimate braking. Headlight वगैरह कैसा? आप तो नाइट में चलाते हो ना? Yeah, night में I feel headlight is very good. It's super visible and high beam is also good. And I haven't seen any disturbances as of now. And I've got PPF protected also अच्छा. for the headlight and the odometer. हाँ, odometer. Yes. Nice. I've got PPF done for these two. एंड इसका जो एक्सेसरीज अभी आप बता रहे थे, तो आपने 3-4 एक्सेसरीज के अलावा व्हाट अदर एक्सेसरीज आर अवेलेबल एट शोरूम? They had all except the front grill, which is available right now. Abhi I'll go, and if they're open, I'll go and get this front grill also fixed abhi. So and they also have this handguard, handguard, and also I think they have some accessories on the side for the for touring, saddlebags and all. So basically they had it all. कल जावा. मतलब आपके हिसाब से ऐसा कुछ है कि इसके अंदर इम्प्रूव किया जा सकता था, कुछ बेटर कर सकते हैं? आई नो इट्स वेरी अर्ली फॉर मी टू आस्क यू दैट बिकॉज 1300 किलोमीटर में उतना ज़्यादा मालूम नहीं पड़ेगा. थोड़ा बहुत हो सकता था मे बी ऑन द फिट एंड फिनिश. यस, फिनिश राइट. डू यू फील एनी काइंड ऑफ जैसे चलाने के टाइम पे कोई साउंड वगैरह ऐसा कुछ? नो, नॉट रियली, बट लाइक आई सेड ये बिकॉज ऑफ दिस ब्यूटीफुल रोड्स we are not supposed to take this out in the city. If you do it and if you get on that bump, yeah, it will start some noises. You can expect. Who should buy this as per you? जैसे मेरे को देखो, मैंने आपको बताया कि मेरा रिक्वायरमेंट ये रहता है कि एक ही बाइक से मैं सब कुछ कर सकूं. तो आपके हिसाब से ये किसको खरीदनी चाहिए? सो फार आपका जो एक्सपीरियंस है उसके हिसाब से मुझे लगता है कि द पर्सन हु इज़ रियली एंथुजियास्ट, कि भाई जिसको पावर चाहिए, ऑफ रोड भी जाना है, बैड रोड्स पे भी जाना है, तो एक नॉर्मल बंदा जो डेली 9 to 5 जॉब के लिए जाता है सिटी में, चला सकता है आराम से? If you ask me, even I'm into a 9 to 5 job, so आराम से चला सकते हैं. Yes. If you ask me who should buy this, I would say only those who want a different segment of vehicle. This is not just any other bike, for sure. The engine is super classy, engine is good. Yes, this is the proper look of Scrambler. Yes, bhai, you got it right. So someone who wants that feel, that rush, someone who wants to live in the moment, not caring about mileage or how much it costs, or not someone who cares about city drive and all, it is for them. It is not for those who think about mileage and buy handling, buy this, buy that. No. Okay. Scrambler लेना है, लो. Buy this Scrambler. This is the bike to buy. हाई स्पीड स्टेबिलिटी कैसी है? ऐसा तो नहीं है कि हवा है और लेफ्ट चली जाए, हवा है राइट चली जाए? Yeah, frankly speaking, इसको I didn't drive it more than 90. So I haven't touched 100 also. I think इसके अलावा मुझे और कुछ क्वेश्चन है नहीं. अगर आपको और कुछ पूछना है तो आप मुझे डायरेक्टली इंस्टाग्राम पे पिंग कर सकते हैं. मेरा इंस्टाग्राम आईडी है बाइकर प्रकाश चौधरी. नीचे आप एक कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि आपको इनका एक्सपीरियंस कैसा लगा, एंड आपके कुछ और क्वेश्चन है आप नीचे भी पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में. वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करें. मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, राइड सेफ एंड ऑलवेज वेयर योर हेलमेट. बाय बाय.